A very good morning to all of you. Jai Hind and welcome to the Daily Current Affairs and MCQ series. हाँ जी, good morning everybody. I hope आप सभी लोगों का वीकेंड बढ़िया गया है. चलिए ग्रेट. जिन लोगों ने HCS का एग्जाम दिया है, कीज जो है ऑलरेडी पुट कर दी गई हैं टेलीग्राम चैनल पे और डिस्कशन भी ले लिया है हम लोगों ने, है ना. CSAT का भी आप लोगों ने देख लिया होगा. चलो ग्रेट. So let's begin with the first article that we are discussing today. That is the LCA Mk2. So डिफेंस फ्रंट पे जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसके रिलेटेड ये आर्टिकल है. सो लेट्स टेक अ लुक व्हाट एग्जैक्टली इज द डेवलपमेंट फ्रॉम द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो LCA प्रोग्राम को ओवरसी करती है. सो LCA की तरफ से फाइनलाइज कर दिया गया है डिजाइन को जो अपग्रेडेशन करनी है हमने Mk2 एयरक्राफ्ट में, एंड ऑन दैट फ्रंट इट हैज also begin with the steel cutting which is expected to start soon, but the design has been frozen. Now see, this is going to be an upgrade, as you must have read in the article if you have viewed the Hindu daily session, that the configuration for the fifth generation advanced medium combat aircraft, that is AMCA, has also been frozen and the preliminary design is completed. Now see, certainly we have to move forward on the technology front. Many countries, they are already having advanced aircrafts, particularly the LCAs. LCAs की जो खास बात है वो ये है कि ये बहुत एजाइल होते हैं. दे आर वेरी मच operationally capable when it comes to the highly skilled, and the maneuverability is so great that you can deploy them at the altitudes where you cannot deploy the larger aircrafts, right? So the rollout of the aircraft Mk2 is planned next year and the first flight is expected in early 2023. मतलब कि प्लान जो है 2022 का है इसको रोल आउट करने का. पहली फ्लाइट हम 2023 अर्ली में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या मे बी अगर चीजें और फास्ट फॉरवर्ड कर दी जाए तो 2022 लास्ट में. देन फरवरी में डिफेंस मिनिस्ट्री ने HAL के साथ, दैट इज द PSU, वन ऑफ द मेजर PSUs इन इंडिया, दैट इज द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. HAL के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था to supply 83 LCA Mk1A to the Indian Air Force, right, worth rupees 48,000 crore. This 1A was already an upgraded version of the LCA Mk1, but now this is the LCA Mk2 which will be having further capabilities. It will be having further advanced weaponry which it can carry along with it, right? Then HAL ने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने with the GE Aviation, that is the अमेरिकन फर्म. इसके साथ ये $716 मिलियन की एक डील साइन की थी फॉर 99 F404 एयरक्राफ्ट्स इनके इंजन्स के लिए, ठीक है, एंड सपोर्ट सर्विसेज टू पावर द Mk1A which is going to power this Mk1A upgrade or the Mk1A aircraft which is an update over the or upgrade over the Mk1, right? Then lastly the Mk2 will be powered by a more powerful GE414 engine. अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कर लो, जो 1A था दैट यूज्ड द 404 इंजन, राइट, बट जो हम अभी 2022 में 2023 में रोल आउट करने की बात कर रहे हैं Mk2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को, दैट विल बी यूजिंग 414 इंजन. सो यू माइट हैव चेंज स्टेटमेंट एंड that is how UPSC might trick you in this Mk2 program. So let's take a couple of questions to enhance the understanding for this article. हाँ जी, which of the following statements is or are correct with respect to the light combat aircraft program of India? First, the light combat aircraft program was started by the government in 1984. Second, the Aeronautical Development Agency ADA was recently established to manage the LCA program. हाँ जी. Yes, good morning Shabu, Rohit, Shubhankar, good morning Pranjal, Joy, good morning Rajat Surya. ओके, रोहित सेज सी. हाँ जी, बाकी लोगों के आंसर्स फटाफट, फिर हम डिस्कस करेंगे दोनों स्टेटमेंट्स को. देखो अभी जो ये ADA न्यूज में है जिसने डिजाइन को ऑलमोस्ट डन करके फाइनलाइज कर दिया है, जो हम LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mk2 की बात कर रहे थे, दैट वाज द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1984 अलोंग विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ADA, ठीक है, along with the establishment of aeronautical development agency in this very year. तो रिसेंटली इसको एस्टैब्लिश नहीं किया गया है, ऐसी कोई चीज जो है रिसेंटली नहीं हुई थी. तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ 1. देखो जब भी
कोई ऐसा मेजर ओवरहॉल जो है या कोई ऐसी मेजर अपग्रेड आती है डिफेंस सेक्टर के रिस्पेक्ट में, देन सर्टेनली यू शुड बी अवेयर ऑफ द एजेंसीज विच आर इंप्लीमेंटिंग दैट। और यहाँ पे एडीए का बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल रहा है थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इन इंडिया, राइट, एंड दैट इज व्हाई यू शुड बी नोइंग द बेसिक्स ऑफ एडीए एज वेल। तो यहाँ पे ये 1984 में नहीं, 1984 में ही जो है एलसीए प्रोग्राम की स्टार्ट के साथ ही एस्टैब्लिश की गई थी। चलिए, आई बिलीव दैट इज क्लियर। क्वेश्चन 1 आंसर ए। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, which of the following statements is or are incorrect regarding the LCA Mk2 aircraft which is currently under development and is expected to be rolled out by 2022? First, the aircraft features enhanced range and endurance, including an onboard oxygen generation system, and this is being integrated for the first time. Second, the LCA Mk2 will be a much lighter and more capable aircraft than the current LCA variants. हाँ जी, ओके ओके, जॉय सेज रीसेंट पर ध्यान नहीं दिया, फाइन। चलिए ग्रेट, कुछ लोग कह रहे हैं ए, कुछ लोग कह रहे हैं बी। ठीक है, देखो जो पहली स्टेटमेंट, ठीक है ग्रेट ग्रेट, ए और बी में से आंसर्स आ रहे हैं, सी या डी तो नहीं दिख रहा है मुझे अभी तक। चलो ठीक है, ओके फाइन। See, certainly the Mk2 is an upgrade and it uses enhanced range and endurance, including an onboard air system that is being integrated for the first time. ये जो है एक पहली बार इसमें इंटीग्रेट की जा रही है चीज, which is a major, a new upgrade, first of its kind you can say in this LCA versions of the aircraft. So first is correct. Second जो है that is incorrect क्योंकि ये lighter नहीं है, it is going to be heavier than the current versions of the LCA aircraft that are in use. ठीक है, चाहे 1A की बात करो चाहे 1 की बात करो, जो LCA Mk2 होगा उसमें ज्यादा भारी वेपन्स को इंटीग्रेट करने की भी कैपेसिटी है, एंड दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी मच हेवियर देन द करंट वेरिएंट्स, एंड हेंस सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी आपकी। ठीक है, certainly it is going to be more capable than the LCA aircraft that are right now in use, right, that is fine, but it is not going to be much lighter. So इसलिए सेकंड गलत है और आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, दैट इज ओनली 2 because you were asked to mark the incorrect statement. ठीक है, चलिए great. So moving to the next article. So India and Australia, the defense minister from India, the foreign minister from India, and their respective counterparts from the Australian side have conducted this 2+2 joint ministerial meet, and multiple things were discussed, including the Afghan issue. So let's take a look at what exactly was on the table, and then we'll take a question. That is, visiting Australian foreign minister, they stated that he has stated that we share a very strong interest in ensuring that Afghanistan never again becomes a safe haven for breeding or training of terrorists. More on the talk of it or the face of it, but not on reality actually. Then an abiding concern for the international community will be that how terrorists are going to use the Afghan soil. Then this was all alongside the India-Australia 2+2 talks between foreign and defense ministers, and concerns about human rights were also flagged. Important यहाँ पे ये है कि apart from upcoming Quad summit, this is a great bonhomie which has been displayed between India and Australia, जो ये 2+2 format में मिनिस्टीरियल लेवल पे मीटिंग जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की हुई है. रिमेंबर दिस इज द सेम फॉर्मेट ऑन विच इंडिया एंड द यूएस 2+2 meet or the 2+2 ministerial is also conducted, right? So it becomes significant on that note as well. Then India with respect to Australia stated that our approach is very similar to Afghanistan, which was summed up by the UN Security काउंसिल रेजोल्यूशन 2593. अब ये देखो, एक तो अफगानिस्तान का मैटर यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की आपस में पार्टनरशिप और साथ साथ यूएन रेजोल्यूशन 2593, ये सारी चीजें यहाँ पे हाईलाइट हो गई, राइट, जिसको पास किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल व्हेन इंडिया वाज हैविंग और व्हेन इंडिया वाज होल्डिंग द यूएनएससी प्रेसिडेंटशिप फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021, राइट. सो ये सारी चीजें जो है रिवाइज करते रहो.
you might have a question maybe on, the United Nations Security Council, UNSC resolution vis-a-vis Afghanistan, India's presidentship, or for that matter, how the presidentship rotates in UNSC, that is on a monthly basis, India's temporary membership of United Nations Security Council for a period of 2 years starting January 2021, and apart from that, the India-Australia engagement and the quadrilateral grouping. ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको लिस्ट करके इसलिए बोल दी हैं क्योंकि ये सभी आपको इंपॉर्टेंट करनी, ये रिवाइज करनी, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में रिमेंबर इन सभी को डिस्कस किया है कभी ना कभी. सो प्लीज मेक श्योर कि यू टेक आउट दोज नोट्स, यू टेक आउट दोज पीडीएफ्स, जहां पे भी आपने इन चीजों को नोट किया है, नोट्स में अपने इंटीग्रेट किया है, उसको रिवाइज करो. प्रीलिम्स जो है दैट इज कमिंग क्लोजर डे बाय डे, राइट. चलो, सो दैट इज द 2+2 मीट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. लेट्स टेक द क्वेश्चन. हाँ जी. Which of the following statements is or are correct with respect to the engagement between India and Australia? First, at the India-Australia Bilateral Summit 2019, both the countries decided to upgrade their 2+2 dialogue from the level of secretaries to that of ministers level. Second, India and Australia so far conducted 3 2+2 foreign secretaries and defense secretaries dialogue. And third, the first such secretarial level dialogue between New Delhi and Canberra was held in 2017. हाँ जी, प्लीज टाइप योर आंसर्स. चलिए, ग्रेट. सो बी और डी दो आंसर्स आए हैं. हाँ जी, बाकी लोग. यस, द रेस्ट ऑफ यू प्लीज टाइप योर आंसर्स. ओके, रोहित, शुभांकर और शब्बू ने तीनों ने अलग अलग आंसर्स दिए अभी तक तो. ग्रेट. डाइवर्सिटी इन द सेशन, ए बी सी एंड डी सारे आंसर्स देखने को मिल रहे हैं. टेक्स एंड गेमिंग इज सेइंग डी. चलो ठीक है. देखो, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट हुआ था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल बायलैटरल समिट ऑफ 2020, which was held in 2020, right? There it was decided that we should upgrade our 2+2 mechanism from the level of defense and foreign secretaries of both the countries to the level of ministers, that is defense minister and the foreign minister of both the countries interacting on that 2+2 format, right? So first is incorrect. It was not in 2019. Rather, I'm even skeptical whether we had a summit in 2019 with Australia at all or not, right? Then India and Australia, they have so far concluded 3 2+2 foreign secretary and defense secretary level summits before we upgraded it to the ministerial level. तो उससे पहले भी ये जो हमारा मैकेनिज्म था 2+2 वाला, इसके थ्रू सेक्रेटरी लेवल पे भी अच्छी एंगेजमेंट जो है वो देखने को मिली थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है. इसीलिए इसको हमने अपग्रेड भी किया है मिनिस्ट्रियल लेवल पे. सो सेकंड इज करेक्ट. एंड देन लास्ट, दैट इज फर्स्ट सच सेक्रेटेरियल लेवल डायलॉग जो है वो 2017 में हुआ था. नहीं प्रांजल, आप सेक्रेटेरियल लेवल 2+2 फॉर्मेट की बात कर रहे हो या मिनिस्टीरियल लेवल 2+2 की? देखो, मिनिस्टीरियल लेवल जो है ये फर्स्ट हुआ है. सेक्रेटेरियल लेवल 2+2 जो है दैट वाज फर्स्ट कंडक्टेड इन द ईयर 2017. सो थर्ड इज आल्सो करेक्ट एंड हेंस योर आंसर विल बी 2 and 3, दैट इज ऑप्शन डी, राइट. चलिए, ग्रेट. सो आई बिलीव दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. So, as I have told you that the first such dialogue between New Delhi and Canberra was held in 2017 and so far we have had 3 2+2 secretarial level dialogues. और इससे पहले जो है हमारी जो bilateral partnership थी, that was elevated to a comprehensive strategic partnership जो 2009 में conclude की गई थी, उसको हमने upgrade कर दिया था to bilateral strategic partnership, right? चलिए, moving to the next article. So again Iran is in news and Iran again न्यूज में है. क्यों?
क्योंकि रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से स्टेटमेंट्स आई थी दैट ईरान इज नॉट लेटिंग इट्स इंस्पेक्टर्स डू देयर जॉब इन द कंट्री, एंड फॉर दैट recently this Sunday itself, yesterday itself, Iran has agreed to let IAEA inspectors do their job, right? And that is why this is in news again. So you can see here Iran's Atomic Energy Organization head and the IAEA Director General conducting this press conference where they have shared this information of Iran's agreement to, or Iran's agreeing to this inspection by IAEA. Right, so the international inspectors, they will install new memory cards into the surveillance cameras as its sensitive nuclear sites, and they are going to continue the filming there. देखो इसी बात को लेके पहले भी this was the particular irritant that had cropped up between IAEA and Iran, and even you can say the Western diplomats and Iran, right? कि ईरान जो है वो अलाउ नहीं कर रहा था कि these new memory cards should be installed in the cameras so that the recording can be done and the surveillance could be continued on those sites where Iran is allegedly having some sort of nuclear activity. Then the announcement was made by the Atomic Energy Organization of Iran after a meeting with the DG of IAEA, that is the Director General, right? And a joint statement also was released by IAEA and Iran, और उसमें ये confirm किया गया दोनों की तरफ से, that is ईरान की तरफ से भी and IAEA की तरफ से भी. अब ये देखो, ये जो है एक पॉजिटिव डेवलपमेंट क्यों है? क्योंकि सर्टेनली अगर ईरान के ऊपर से जो सैंक्शंस हैं वो लिफ्टेड ही रहते हैं और फर्दर ईरान को ईज आउट किया जाता है बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड, particularly the US, right? Then we are going to have some relief on two fronts. First is the oil imports. इंडिया के इंटरेस्ट्स की बात कर रहा हूं मैं. दो फ्रंट्स पे मेजरली हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो इंटरलिंक्ड है ईरान से. दैट इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेरी केयरफुली, प्लीज पे अटेंशन. One is the oil imports. Remember, you have a mechanism with Iran, that is you import oil from Iran in a rupee denominated manner, or in a rupee based import from Iran. So that certainly benefits India. You have immunity when you are trading with another country in a rupee based or a rupee denominated deal. You are immune from the fluctuations which are having or which are being there on the डॉलर फ्रंट, राइट? एक तो चीज हो गई ये, और दूसरी चीज हो गई कि आपका जो चबाहर पोर्ट है, चबाहर पोर्ट की स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस है वो कभी भी कम नहीं हुई. लेकिन ये जरूर है कि ईरान का जेसीपीओए का रिवाइवल, ईरान के सैंक्शंस का कंप्लीटली जो है आगे भी हटे ही रहना, और चबाहर पोर्ट में इंडिया की प्रेजेंस, वो सभी जो है कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं. दैट इज ऑल्सो वन मेजर पॉइंट इन इंडियाज और इंडियन डिप्लोमैट्स माइंड, राइट? चलो, देन lastly this development could buy time for Iran ahead of an IAEA board meeting this week. एक IAEA की board meeting pending है, और एक साथ साथ western powers की भी meeting है, which have been arguing that Iran should be censured over its lack of cooperation with international inspectors. मतलब कि अभी ईरान ने एक तरीके से बैलेंस कर लिया है इस चीज को कि फर्दर डिटीरियरेट ना हो रिलेशन, या कह लो कि और खटास ना आए IAEA के बीच में और ईरान के बीच में, या वेस्टर्न डिप्लोमैट्स और ईरानियन डिप्लोमैट्स के बीच में, राइट? सो एज ऑफ नाउ पीस हैज बीन established, cooperation is, you know, what is the rule of the day. We'll have to see how it unfolds further. चलिए, moving to the question. हाँ जी, which of the following statements is or are correct with respect to the Iran nuclear deal? First, the JCPOA was signed in 2015 between Iran and the P5+1, but the US withdrew from it in 2018. Second, the White House was unable to get the nuclear deal ratified from the Senate, but it implemented it on the basis of periodic executive orders. And third, the Instex was created to facilitate limited trade with Iran after the withdrawal of US from JCPOA. Yes.
ओके, बी एंड डी, दो आंसर्स दिख रहे हैं मुझे अभी तक। हाँ जी, यस द रेस्ट ऑफ यू। चलिए ठीक है, डिस्कस करते हैं। देखो बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं अभी तक। फोर्थ का मोस्टली बी आया है और डी आया है। ओके, टैक्स एंड गेमिंग इज सेइंग स्किप। चलो ठीक है, आप स्किप कर दो, हम डिस्कस करते हैं। देखो जेसीपीओए जो है, इट वाज द बैक चैनल टॉक्स बिटवीन mainly the US diplomats and Iran, which led to the conclusion of the joint comprehensive plan of action in 2015, right, between the permanent 5+1 members and the US withdrew from it in 2018। मतलब कि एक झटका यूएस की तरफ से अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वाज गिवन टू ईरान न्यूक्लियर डील। सो फर्स्ट जो है वो सही है। देन सेकंड, एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो अभी भी हो सकता है देखने को मिले, कह नहीं सकते कुछ हम, अगर जेसीपीओ में फॉर्मली अमेरिका दोबारा ज्वाइन करके रिवाइव करता है जेसीपीओ को, कि क्या जो है यूएस सेनेट वो इस बार रैटिफाई कर देगी। इज द यूएस सेनेट गोइंग टू रैटिफाई दिस टाइम द जेसीपीओए इफ इट ऑल इट इज रिवाइव्ड? So that is going to be a question in the White House, certainly on the minds of the US president, current president Joe Biden, because at that time when the White House was under the presidentship of Barack Obama, at that time, because of the repeated presidential executive orders, Barack Obama was able to ensure that Iran does not have to face any sanctions, right? So that is also correct, that it was on the basis of repeated periodic executive orders from the then President Barack Obama, but the Senate never ratified it. And third, that is INSTEX, that is Instrument for Trade Exchanges। ये जो instrument in support of trade exchanges जो है, this was supported by 3 European countries, that is Instrument in Support of Trade Exchanges। देखो ये जो इंस्टेक्स है ना, ये बेसिकली यहाँ पे इसको डिस्कस करने का मोटिव ये है कि आफ्टर यूएस विड्रू फ्रॉम द जेसीपीओए, ईरान ने ये बहुत समय तक वेट करी कि क्या यूरोपियन जो कंट्रीज हैं जो पार्ट थे जेसीपीओए का, ईरान न्यूक्लियर डील का, वो कहां तक सपोर्ट कर सकेंगे, वो कहां तक जो है यूएस के अगेंस्ट जाके, यूएस की जो लाइन थी उस वक्त की अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, उसके खिलाफ जाके दे विल बी एबल टू hold their position as far as the Iran nuclear deal and the commitment made by these countries was concerned। तो उसी कमिटमेंट के तहत जो है फ्रांस, जर्मनी एंड यूके, दैट इज द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड जर्मनी, इन तीन देशों ने जो है दे हैड told Iran that it need not worry, the European countries, they are going to stick to, they are not going to withdraw from the JCPOA, right? And that was the assurance that was repeatedly given to Iran by these European countries after the US withdrew in 2018। ठीक है, तो ये इंस्टेक्स जो है वाली स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और आज की डेट में इसकी रेलेवेंस ये है कि हमें ये देखने को दोबारा मिल सकता है कि इट कुड बी अगेन अ शोडाउन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर इन यूएस as far as the ratification or the revival of the complete revival of JCPOA is concerned। ठीक है, चलिए, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा सी, दैट इज फॉर क्वेश्चन 4 आंसर इज गोइंग टू बी सी। सभी स्टेटमेंट जो है सही है यहाँ पे, ठीक है। चलो ग्रेट, ऑल्दो आई डोंट थिंक कि किसी का आंसर सही सी किसी ने भी यहाँ पे आंसर जो है वो टाइप किया था, बट नॉनदलेस यस। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। हाँ जी, which of the following statements is or are correct regarding coral reefs and their presence across the world? First, the status of coral reefs of the world 2020 was prepared by the United Nations Environment Programme along with the Australian government। Second, since 2010 almost all regions had exhibited a decline in average coral cover। And third, the Great Barrier Reef is located in the Coral Sea। Yes, please type your answers quickly।
Okay, Shubhankar is saying A. चलिए A, C and D, 3 आंसर्स दिख रहे हैं अभी तक। चलो ग्रेट, डिस्कस करते हैं। देखो पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि जो स्टेटस ऑफ कोरल रीफ्स ऑफ द वर्ल्ड 2020 है, that was not prepared by the UNEP, but rather that was prepared by the Global Coral Reef Monitoring Network. That is the Global Coral Reef Monitoring Network along with the government of Australia. ठीक है, it was not the UNEP that was involved with the Australian government, but rather Australian government in collaboration with, or you can say the Coral Reef, Global Coral Reef Monitoring Network along with the Australian government has released the status of coral reefs world 2020 report. So first is incorrect. Then second, that since 2010, this is one of the observations that have been made in the report, that almost all regions, or rather all regions of the world, they have shown a decline in the coral cover, in the average coral cover of those regions. So that simply goes on to state what is the marine health that we are having, and that is portrayed very eminently in this report. Then the Great Barrier Reef, since Australia is also in news, which is the collaborating partner here of the Global Coral Reef Monitoring Network. So you all must be knowing that it is located in the Coral Sea of the coast of Australia, that is Queensland. ठीक है, तो third भी correct है. So your answer will be second and third, that is option C, 2 and 3 only are correct, right? चलो, so let's quickly move to the location. That is, here you can see the Great Barrier Reef, which is one of the largest coral presence areas with coral presence in the world, right? And this is how it has been bifurcated into some of the parts here, right? And this is the Coral Sea where it is located, off the coast of Australia, right? So with that we conclude this session. Thank you so much all of you for participating in it. This is Piyush signing off. All of you study well, stay safe, and I'll see you. Bye bye and take care.